Hi guys, welcome back to the Quants part of the course. We are doing the CAT 22 Prep Strategy course on the Mindworks channel, Arun Sharma Mindworks channel on YouTube, and this is part of my 7-minute explainers series, and this is part 3 of the Quants section. We have done a session on the Quants syllabus. We did a session yesterday on the round 1 of quants, what should you do. And if you remember, the key understanding, the key takeaway about round 1 of quants was that when you come to your self problem solving question banks, and once you have defined your self problem solving question banks, you should not take assistance in those. So the question that does arise and that's what I'm going to deal with, discuss in today's session, is that when you start facing challenges in quantitative aptitude, that means when you pick up quantitative aptitude, is not like history or physics or geography कि एक बार पढ़ लो और खुद से पढ़ लो, ठीक से और पढ़ लो तो हो जाएगा. Obviously, when you start solving QA questions, you are bound to, no matter how good you are with your thinking and your problem solving abilities and skills, you're bound to come across situations where you can't solve the question. और वैसे सिचुएशन में मैंने देखा है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो रिपोर्ट, स्पेसिफिकली जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द एक्सपीरियंस. पहला क्वेश्चन में गए नहीं सॉल्व हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में गए नहीं सॉल्व हो रहा है, पता चला 3 घंटे बैठ गए जो 3 घंटे का प्लान था, और 4 क्वेश्चन हुए और 3 क्वेश्चन नहीं हुए, एंड यू एंड अप हैविंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, एंड देन द नेक्स्ट डे things start getting worse, and then after a few days you don't feel like picking up quants, although you had psyched yourself up for picking up for doing quants well this time around when you pick this up, but the experience is not going your way. So वैसे situation में क्या option है तुम्हारे पास? What should you think of? So please understand one thing, that this is natural and will happen to everybody. Even good students will face this, that when you pick up questions, हर question solve नहीं होगा, right? अगर self problem solving में जा रहे हो, because एक simple logic समझ लो. Suppose मैंने एक question bank उठाया और उस क्वेश्चन बैंक का मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो उसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो मैं तैयार हूँ कैट देने के लिए कल, या फिर वो क्वेश्चन बैंक बहुत आसान था. तो इन योर केस, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन एक्सेट्रा, द फर्स्ट रीज़न माइट नॉट बी द रीज़न वाई यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग इन अ क्वेश्चन बैंक. अगर तुम सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हो किसी क्वेश्चन बैंक में, इसका मतलब वो क्वेश्चन बैंक जनरली थोड़ा ईजी होगा, और तुमको थोड़ा टफर क्वेश्चन बैंक्स में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे नेगेटिव होने लगेंगे. सो बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट रिमेंबर दिस फैक्टर कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन बैंक उठाते हो, तो जितने क्वेश्चन ट्राई करते हो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें एक रेशियो रहेगा हमेशा. देयर विल ऑलवेज बी अ रेशियो. दैट रेशियो माइट बी कि यू सॉल्व 60% ऑफ व्हाट यू पिक्ड अप, इट माइट बी 80% ऑफ व्हाट यू पिक्ड अप, इट माइट इवन बी 30% ऑफ व्हाट यू पिक्ड अप. एंड प्लीज़ रिमेंबर, फॉर ईच ऑफ दीज पीपल, फॉर ईच ऑफ दीज काइंड्स ऑफ पीपल, देयर इज अ पाथ to redemption, there's a path to glory in the quant section of the exam. So just all you have to do is understand that these experiences are going to happen. And which experiences? There are 4 experiences that you will when you pick up your self problem question banks, self problem solving question banks, you will experience 4 things. 4 experiences you'll have. कौन से 4 experiences हैं? पहला, कुछ questions easily solve हो जाएंगे. दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व विद डिफ़िकल्टी, मतलब थोड़ा तुमको स्ट्रेच किया, तुमने सॉल्व करने की कोशिश की, आराम से नहीं हो रहा था लेकिन सॉल्व हो गया, निकल गया क्वेश्चन. थर्ड इज क्वेश्चन ट्राइड बट नॉट सॉल्व, कोशिश किया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ. एंड चौथा जो एक्सपीरियंस होगा वो क्वेश्चन विद नो आइडिया. ये चारों क्वेश्चंस तुमको एक्सपीरियंस मिलेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन विच लेवल ऑफ डिफिकल्टी यू आर एट एंड हाउ गुड योर क्वांट स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर, द प्रोपोर्शन ऑफ दीज विल वेरी. सो फॉर समबडी स्ट्रॉन्ग एट क्वांट्स, 1 and 2 ज़्यादा होगा, 3 और 4 थोड़ा कम होगा. somebody weak at quants, 1 and 2 कम होगा, 3 और 4 ज़्यादा होगा, right? But please understand, as I said, even somebody who is only 30% or 40%, even somebody for whom who is able to solve only 30 to 40% of this, or able to come across only 30 to 40% in these two, उसके लिए भी there is redemption in quants. There is a way out to do it. Now, just one piece of advice before we move into what you do with what you can't solve, etc. एक चीज़ याद रखना कि during your first round, as I said last time, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि तुम जब क्वेश्चन बैंक्स में जाते हो,
सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अगर तुम 3 घंटे बैठ गए और 7-8 क्वेश्चन ही प्रोसेस कर पाए तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसलिए उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा लाइटर बनाने के लिए या फिर लिटिल बिट लेस फ्रस्ट्रेटिंग बनाने के लिए व्हाट आई सजेस्ट, इसकी तुम एक 10 से 12 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो कि इस किसी भी क्वेश्चन को 12 मिनट 10 या 12 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचोगे। जनरली किसी क्वेश्चन को अगर तुम 10-12 मिनट ट्राई कर लेते हो, उसमें अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है उस पॉइंट पे, तो इट्स बेटर टू कम बैक टू द क्वेश्चन लेटर विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। उसी टाइम उस डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन के बारे में और सोच के ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। यू विल नोटिस दिस, कोई क्वेश्चन सॉल्व होना है तुमसे तो 10-12-15 मिनट में हो जाता है, और उसमें नहीं हुआ तो आगे चल के उस पर तुम 40 मिनट भी लगा दो तो नहीं होगा। तो 40 मिनट लगाने का एक बेसिक प्रॉब्लम यही हो जाएगा, अगर तुम 40 मिनट लगाने लगे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में, कि तुम 3 घंटा बैठ जाओगे और तुम्हारा 7 क्वेश्चन ही निकलेगा। सो दैट्स वाई कीप अ टाइम लिमिट ऑफ 10 to 12 मिनट्स। 10 से 12 मिनट में अगर क्वेश्चन निकल नहीं रहा है तो उसको या तो 3 या 4 में कैटेगराइज कर दो, अगर निकल गया तो 1 या 2 में कैटेगराइज कर दो, और जस्ट मेक श्योर दैट यू पुश थ्रू द क्वेश्चन बैंक। तो ऐसा करोगे तो अगर 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है लेट्स से LOD 2 पे, अपर लिमिट 500 मिनट लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे उसको प्रोसेस करने में। और प्लीज़ रिमेंबर, इवन दो 3 सीम्स की डज नॉट गिव यू एनी लर्निंग बिकॉज यू डिड नॉट गेट थ्रू द क्वेश्चन, उसमें भी लर्निंग होता है। अगर तुमने किसी क्वेश्चन को ट्राई किया और नहीं कर पाए, वहाँ पे भी देयर सम लर्निंग, सम इंक्रीमेंटल लर्निंग हैपनिंग इन योर माइंड। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। और करना क्या है प्रोसेस में, करना क्या है, व्हाट डू यू डू विद क्वेश्चंस दैट यू कांट सॉल्व। 3 और 4 के साथ क्या करना है, 1-2 के साथ क्या करना है, कीप कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, कीप गोइंग बैक, coming back. If you've got a good question bank which you have picked up, there'll be a lot of value in solving it a second time, a third time and a fourth time. So round 2 में आओ, 1 और 2 को रिसॉल्व करो, 3 और 4 को फिर से ट्राई करो, राउंड 3 में आओ, 1 और 2 को रिसॉल्व करो। ऑब्वियसली राउंड 2 में क्या होगा कि 3 वाला कुछ 1 में चला जाएगा, कुछ 2 में चला जाएगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस that you were not able to solve, some of these questions will transfer into these in the 3rd round and the 4th round or the 2nd round also. So why that happens, I'm just going to disregard this because I want to complete my thought. So why the question is, why are things likely to change in rounds 2, 3, 4? राउंड 1 में जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो राउंड 2, 3, 4 में क्यों चेंज होगा, उसका एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ। सपोज तुम राउंड 1 में तुमने 200 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक उठाया है, क्वेश्चन 1 तुमसे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 4 सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन 5 सॉल्व नहीं हुआ। इस तरह से यू बिलोंग टू अ पर्सन हु इज ओनली एबल टू सॉल्व, यू बिलोंग टू अ ग्रुप विच इज ओनली एबल टू सॉल्व 30% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तुमसे सिर्फ 30% क्वेश्चन सॉल्व है, दैट मीन्स 200 क्वेश्चन में तुम सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 1 और 2 में 60 गए और 140 क्वेश्चन तुम्हारे 3 और 4 में। या तुमने ट्राई किया, सॉल्व नहीं हुआ, या फिर तुम उसको सोच ही नहीं पाए उसके बारे में। जब तुम सेकंड राउंड में आओगे और सेकंड राउंड में 1 को फिर से सॉल्व करोगे और उसके बाद क्वेश्चन 2 पे जाओगे, तो क्वेश्चन 2 पे जब तुम फर्स्ट टाइम जब तुम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर रहे थे, तो योर नेट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग was 1 क्वेश्चन। तुमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था खुद से अपने लाइफ में या इस राउंड में। जब तुम सेकंड क्वेश्चन पे अब आ रहे हो, तुमको 60 क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है, 60 सवाल तुम सॉल्व कर पाओ खुद से, उस 60 सवाल को सॉल्व करने का खुद का एक्सपीरियंस है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, एवरी टाइम यू आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन योर ओन, योर एबिलिटी गोज अप एंड योर बिलीफ अबाउट योर एबिलिटी गोज अप। दोनों चीज़ बढ़ता है, तुम्हारी एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन गोज अप, बिलीफ ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑल्सो गोज अप। सो अब तुम जो आदमी इसको सॉल्व कर रहा था पहले बार, वो सेम आदमी नहीं है। फिजिकली तुम सेम हो, मे बी जस्ट 1 month लेटर, बट मेंटली यू आर डिफरेंट बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग 60 सेट्स, 60 क्वेश्चन देयर, और 60 क्वेश्चन खुद से किया है तुमने, अपने बल पे किया है। तो जब तुम बहुत सारे इन क्वेश्चंस पे आओगे जो फर्स्ट राउंड पे नहीं हो रहा था, तुम्हारा स्किल लेवल ऊपर चला गया, तो जो क्वेश्चंस अब तुम्हारे स्किल लेवल के नीचे हैं उनको तुम सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट लेसन में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो यू आर नॉट सो मच ऑफ डेड डोंकी सो टू से, और यू आर नॉट so much of a helpless person. Rather, there are certain tools and techniques that you can actually use
when you're not able to solve a question, to start to think better. So if you use these 2-3 tools properly, I'm quite sure you can actually turn around your quants in a 3 to 6 month period, right? And as I said, some chapters might require 2 rounds, some chapter might require 4 rounds, some chapter might require a 5th and a 6th round. But as far as you're ready to do these rounds, I don't think anybody can stop you from getting through to your objectives, right? So just to wind up, please follow me on Instagram. I'm Arun Sharma, I am be there. And there's a Telegram group which I have now. A lot of people wanted to connect to me through a group. So this is the group, the URL is here. I'll send you a link or I'll put the link in the description of the video and also in the comments. And you can also download the Arun Sharma Academy app, which is available on Play Store, also on Apple Store. On Apple, you'll have to download it from the My Institute app, and you'll have to use the app organization code DGTCB to get access to this on the App Store. So this is what you can, again, we'll be bringing a lot of courses, etc. on the app also. And you can of course join the CAT 22 comprehensive program on the app also, along with joining on Mindworks. The next batch is starting 12th January and the next batch after that is starting 20th January. And all the videos and all the courses of Mindworks will also be available on the app there. So I look forward to guiding you through these forums, etc. And I'll see you in the next video talking about what I said. What are your options when you get stuck in a question? Bye for now.